Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to maths class. Today we are going to start unit number 7, fractions. In this lesson, we will learn about 7c mind gym and numerator and denominator. In this previous period, we learned about 7b mind gym and finding objects equal to a fraction. I hope that what I explained to you in the previous period would have been well understood by me. So now let's start. Open page number 111. Please take your pencil, write CW and today's date is 18 December 2020 and day is Friday. Okay, 7C mind gym. First question, circle the objects in the collection as per given fraction. दिए गए फ्रैक्शन के अनुसार कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करें. नाउ फर्स्ट, हाफ ऑफ 6. टोटल कलेक्शन 6. देन टू फाइंड 1/2 वी डिवाइड बाय 2. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट्स का हाफ फाइंड करना है तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से. सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. Understood everyone? So half of 6 is 3. We will circle 3 objects. 1 2 3. हम 3 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 9. टोटल कलेक्शन 9. टू फाइंड 1/3. To find 1/3 we divide by 3. Okay, now 9 divided by 3 is equal to 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 1/3 of 9 is 3. We circle 3 objects. यहाँ पे आपको 3 जो ट्रायंगल्स है, 3 ट्रायंगल्स को आपको सर्कल करना है. नाउ नेक्स्ट, सी हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर? 4. हाफ ऑफ 4. टोटल कलेक्शन 4. देन टू फाइंड हाफ वी डिवाइड बाय 2. हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2. So write here 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Okay dear. So we will circle 2 glasses. Now next, D. How many chocolates are there? 8. Total collection 8. And to find 1/4 of 8. 8 का 1/4 find करना है. Then to find 1/4 we divide by 4. So 8 divided by 4 is equal to 2. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So we will circle 2 chocolates. Now next, E. How many flowers are there? 16. Total collection 16. And to find 1/4 of 16. To find 1/4 we divide by 4. Okay, so now 16 divided by 4 is equal to 4. Write here 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. So answer is 4. We will circle 4 flowers. Now next, how many balls are there? 6. Total collection 6. To find 1/3 of 6. To find 1/3 we divide by 3. So 6 divided by 3 is equal to 2. Answer is 2. Okay. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So we will circle 2 balls. Understood everyone?
Now next question, complete. 1/2 of 6. To find 1/2 of 6 is equal to 3. Now here 6 already आपका राइट है, then divided by 2, then is equal to 3. Okay? To find half, we divide by 2. Then 6 divided by 2 is equal to 3. Now next, B. 1/3 of 9. To find 1/3 of 9 is equal to 3. आपको बॉक्स में 9 लिखना है. Then 9 divided by 3 is equal to 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Now next, 1/4 of 8. To find 1/4 of 8, we divide by 4. So 8 divided by 4 is equal to 2. 4 1s are 4, 4 2s are 8. Now next, D. Half of 10. To find 1/2 of 10 is equal to 2. To find half, we divide by 2. So 10 divided by 2 is equal to 5. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, and 2 5s are 10. Now next, 1/3 of 15. So to find 1/3 of 15 is 15 divided by 3 is equal to 5. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, and 3 5s are 15. Now next, F. 1/4 of 36. To find 1/4 of 36, it means 36 divided by 4 is equal to 9. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, and 4 9s are 36. Is that clear? Okay. Now next, question number 3, solve. Same method. Half of 12. So 12 divided by 2. To find 1/2 of 12. Okay. Answer is 6. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, and 2 6s are 12. Now next, B. So answer is 6. Next, B. 1/4 of 16. To find 1/4 of 16 is equal to 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, and 4 4s are 16. So right answer 4. Now next, 1/4 of 40. Okay. To find 1/4 of 40 is, now 4 tables. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, and 4 10s are 40. So answer is 10. Okay dear. Now D, E, F, G, H, I is your homework. Do the homework in your maths copy. Now turn your page. Numerator and denominator. A fraction is written in the form. एक फ्रैक्शन का फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए? लाइक दिस. यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस शो किए जा रहे हैं. ओके. जो पिंक बॉक्सेस हैं, देन ग्रीन बॉक्सेस हैं. ओके. देयर आर 2 बॉक्सेस. नाउ 2 by 4, 1 by 3, 6 by 7. Now the number above the line, it means pink box, is called the numerator. मतलब लाइन के ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर
कहेंगे, उसको न्यूमरेटर कहा जाता है. इट मीन्स 2 इज न्यूमरेटर, 1 is numerator, 6 is a numerator. Okay, now next, it represents the selected parts, objects of a whole or a collection. यह नंबर होल या कलेक्शन के सिलेक्टेड पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब शो करता है. ओके, ऊपर जो नंबर लिखा रहता है वो सिलेक्टेड पार्ट रहता है. यस डियर, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन. एंड देन डाउन पोजीशन पे जो रहता है वो रहता है टोटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन. इट मीन्स जो ऊपर नंबर शो किया जा रहा है वो सिलेक्टेड पार्ट है. जो पिंक के इसमें बॉक्स में लिखा जाएगा वो है न्यूमरेटर. नाउ नेक्स्ट, द नंबर बिलो द लाइन. अभी जो नंबर लाइन है, ओके, इसके नीचे जो बॉक्स है इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. लाइन के नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है. It represents the total number of equal parts of an object or total number of objects in a collection. यह एक कलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट्स के इक्वल पार्ट्स के टोटल नंबर या ऑब्जेक्ट्स की टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है. ओके, इट मीन्स जो नीचे वाला जो नंबर रहता है वो डिनोमिनेटर है और वो टोटल ऑब्जेक्ट्स शो करता है. द लाइन बिटवीन देम रिप्रेजेंट्स डिवीज़न. और इन दो बॉक्स के बीच में जो लाइन है उसे हम डिवीज़न कहते हैं और वो डिवीज़न रिप्रेजेंट करता है. नाउ एग्जाम्पल 1, राइट द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, देयर आर 7 triangles. Selected parts, it means shaded parts. How many shaded parts are there? 1, 2, 3. Then total equal parts of the whole. Complete कितने parts है total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay dear. Now fraction is 3 by 7. 3 upon 7. So numerator 3 and denominator 7. The number above the line is called numerator and the number below the line is called the denominator. Now next, selected objects of the collection 4. Then total objects of the collection 9. There are 9 circles. Then shaded objects 1, 2, 3, 4. Okay dear, selected objects 4 and total objects of the collection 9. So fraction is 4 by 9, 4 upon 9. Then numerator is, write down 4 and denominator is 9. Okay dear. The number above the line is called the numerator. Numerator आपका 4 है and the number below the line is called the denominator. So denominator is 9. Understood? Now next, daily life application. How many parts will you shade if numerator is 0? यदि न्यूमरेटर 0 है तो कोई पार्ट जो है, मतलब किसी पार्ट्स को आप कितनी बार शेडेड करोगे? नाउ आंसर इज, इफ न्यूमरेटर इज 0 नो पार्ट विल बी शेडेड. यदि न्यूमरेटर 0 है तो कोई भी पार्ट शेडेड नहीं किया जाएगा. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, if the numerator and denominator are equal, then what will you get? यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो आपको क्या मिलेगा? सो आंसर इज, if numerator and denominator of a collection, it means fraction, are equal, we get a whole that is 1. 5 1s are 5. So answer is 1. तो सर्कल में आपको क्या लिखना है? 1. Understood everyone? Now next period we will learn about 7D, mind gene and fraction apps. Okay, bye dear. Take care. Stay home. Stay safe.